Good evening, friends. I'm Pooja Gandhi from Concept Communication. Welcome you all to the virtual IPO roadshow of Rajputana Biodiesel Ltd. Rajputana Biodiesel Ltd is engaged in the business of manufacturing and supplying biofuels and its byproducts, namely glycerin and fatty acids. The company processes various indigenous raw materials to manufacture biodiesel. Now, I'd like to introduce from the management Mr. Satik Soni, Managing Director of the company. Welcome, sir. Mr. Tanay Atar, Whole-Time Director. Welcome, sir. Thank you. Mr. Mr. Ayush Jain, Secretarial Advisor. Welcome, sir. And Mr. Kaushik Khambaria from GY Capital Advisors. Welcome, sir. Good afternoon, all. Now, request Thank you, Satik ma'am. ji to give a quick brief about the company, followed by detailed presentation. Over to you, sir. Thanks a lot, ma'am. Thank you for the lovely introduction. First of all, I'd like to welcome everyone. Thank you for taking out time today and joining us for this meeting. So myself, Sarthak Soni, I am the MD of Rajputana Biodiesel Ltd. Our company was founded in November 2016, and we started our commercial operations in August 2018. And we are mainly in the manufacturing of business of biodiesel along with its byproducts, glycerin and fatty acids. So these three are our major products that we deal in. Moving forward, before we start the presentation, I would like everyone's attention to something that I'd like to share. तो start करने से पहले presentation I would like to discuss the opportunity we are looking at the moment, the opportunity size. So biodiesel industry is why it is correctly placed as of now. उसका एक reason है कि OMCs जो हैं, जो कि Indian Oil, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum, they are blending the biodiesel in their diesel. So if you want to look at the opportunity size, the OMCs are selling 8,000 crore liters of diesel every year. So as per the National Biofuels Policy, we have to blend a 5% biodiesel into diesel. So that gives us 450 crore liters of biodiesel that the industry needs to supply to the OMCs every year in order to meet the 5% target. So last year, only 50 crore liter of biodiesel was supplied to the OMCs. So you can see that a big, massive 400 crore liter deficit is there that is there in front of us to be supplied. So yeah, this was a brief about the opportunity size and the scale we are looking at in this sector. Moving forward, I'll be sharing the presentation now. Is the presentation visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. It is visible. Hello, everyone. As I gave a brief introduction of our company, I would like to tell you more about it now. We currently are having two manufacturing units, one based in Fulera, Rajasthan, in 4,000 square meters area, and the another one in Meerut, Uttar Pradesh. We have recently acquired this unit named as Nirvan Raj Energy Private Limited, and it is our subsidiary now. So we are possessing two key manufacturing units producing biodiesel and its byproducts, glycerin and fatty acids as of now. We are producing biodiesel from various indigenous non-edible oils, and going forward, we are looking for a consistent growth and strong management in terms of our company. Our major customer base is government PSUs, and seeing the scenario and strong tailwinds of the industry, we feel that moving forward, we would want to add value to our byproducts as well and explore other opportunities that come our way in terms of backward forward integration and exports.
So, during our journey since 2018, we've had a good 6, 7 years of experience. We've catered more than 20 plus industries across the country. We've had a chance to deal with a lot of consumers. We've tried to create a lot of awareness regarding the product. We've catered on-road, off-road vehicles, power sector, lubricity industries, pharma grade industries, textiles, etc. So, currently, we are manufacturing biodiesel as per the BIS 15607-2022 standard. So this is a technical standard which is set by the OMCs, according to which we have to supply material to them. Both our units at Fulera and Meerut have 30 kiloliters a day approved production capacity, and 30 people are currently working at Fulera and 20 at Meerut. So what is biodiesel? Biodiesel is a renewable fuel which is absolutely carbon free, and it is made from various indigenous non-edible variety of oils. It is an absolute replacement of high-speed diesel and can be blended into diesel to form a homogeneous product. Other than its carbon reduced carbon footprint, biodiesel also enables high performance in the engines as it is it has high lubricity present in itself. So overall, biodiesel can be used as neat in B100 form or as blended fuel. So it is an absolutely key product in terms of the energy space where we can reduce our dependence on high speed diesel. Currently, both our units, one at Fulera and one at Meerut, are running at around 80% capacity utilization. Of both these units are dealing in biodiesel, crude glycerin, and fatty acids. As I had already discussed that biodiesel, we have catered a lot of industries in terms of biodiesel. I would want to throw some light on crude glycerin and fatty acids and its uses. So crude glycerin is a key byproduct and it has several uses. It can be used in industries like animal feed, in syrup industries as a sweetener, in the pharma industries like a gel in capsules. A lot of coatings and polymer industries are also using glycerin. So this in coming times will play a very key role in terms of our future plans of how we want to use this crude glycerin and add value to it. Coming on to the next byproduct, which is fatty acids. Fatty acids are also generated during our refining process, and they are vastly used in food products and soaps and cosmetic industries. Going forward, we are wanting to convert these fatty acids again back to biodiesel also. So these are the two key places where we are looking to utilize our glycerin and fatty acids. These are some glimpses of our manufacturing unit placed at Fulera. It is in 4,000 square meters area. So yeah, coming on to the next slide of our presentation, which is the investment rationale. So why would we want people to invest with us? This is a very big, important question that everyone wants to address while seeking a presentation or joining some interviews. So currently, we have a young team. Most of us are in our late 20s or early 30s. We have a good 20 years ahead of us. Going forward, we want to expand our business operations across the country as our major stable revenue comes from the OMCs, which are Indian Oil, Bharat Petroleum, and Hindustan Petroleum. It poses and gives us a great opportunity to expand our operations in different cities where OMC blending terminals are present. So, as I previously mentioned, strategic acquisition of our subsidiary was done this year in March. That allowed us to increase our presence in the state of Uttar Pradesh as well. Going forward, we'd be looking for such opportunities to increase our market presence across the country. This sector, particularly biodiesel, has really strong tailwinds going in its favor. As per the National Biofuels Policy, there is a 5% blending target for blending biodiesel into high-speed diesel.
This poses a great opportunity for entrepreneurs and companies like us to move forward and scale operations exponentially and go on to make a very renowned name in this industry. So almost 4.5 billion liters of biodiesel is required to fulfill this target. So as I mentioned earlier, only 50 crore liters has been supplied last year. So this 400 crore liter deficit is a great opportunity in front of us. Going forward, not only scaling operations we don't only want to scale operations in biodiesel, we want to complete our backward as well as forward integration as well. We want to add value to our byproducts, refine glycerin into pharma grade, and convert our fatty acids into biodiesel again. This will enhance our profitability also. Um, Going forward, we are looking to establish another unit very soon, and where we would be, as mentioned earlier, we'd be focusing on backward and forward integration also. So overall, we are strongly positioned in the right sector at the right time with the right team and with the right target set by the government. So the growing acceptance of biodiesel overall gives us a great investment rationale to move forward and keep reinvesting our profits again and again in the business and scale up very quickly. So this slide shows the company's revenue bifurcation in terms of the products. As you can see in FY24, we've done a revenue of 43.27 crores from biodiesel, as compared to the 20.25 crore revenue from biodiesel in FY23, which was 13.82 crores in FY22. Similarly, in terms of fatty acid, we've done a 2.75 crore revenue from fatty acids in financial year 24, against the 1.2 crore revenue of in financial 23. Glycerin revenues, you can see that they have been very stable in terms of every year, financial year 22, 23, and 24. As I mentioned earlier, that we've had a chance to cater customers across the country, pan India. So this slide gives you a fair idea of how many states and consumers we've catered in different parts of the country. So biodiesel is a product that can be transported from one place to the other very easily and gives us a great opportunity to cater demands across the country. Now, coming on to one of the key parts of the presentation where I'd like to explain how the government PSUs are driving our major revenue. So here I would want to discuss the tendering process of the OMCs, how we are empaneled with them and how we get their whole business. So the government of India, through Ministry of Petroleum and OMCs, comes out with a biodiesel tender every year. This tender is floated to only the members in the biodiesel forum. So the empanelment process of any manufacturer with the OMCs is a very tedious and a meticulous process. Uh, there is an initial screening process that happens where a lot of paperwork and technical checks are done by the OMCs. That takes a long period of time. After that, your product is technically tested in a small sample, and then there is a site visit and a joint sampling process which is done. After all this process is completed, and when you are technically approved by the OMCs to supply biodiesel to them, then you are empaneled as an established manufacturer in the biodiesel forum of the OMCs. Only these empaneled manufacturers get the opportunity to supply biodiesel to the OMCs. So the tender which comes out is only floated to the empaneled members. So anyone who gets up tomorrow morning and wants to start this business, they cannot have this empanelment very easily. It takes time and there is a gestation period for this empanelment. Going forward, we get once the tender is out, the OMCs allow us to fill in the allocations, which means how much quantity of biodiesel will be able to supply to them in the full whole year. So
The price is given to us by the OMCs, and the price of biodiesel is same across the country. So we just have to fill in the allocations. And when the tender opens, and if everything is okay, then we are allocated with the right quantities for supplying to them within the year. So we get a monthly price from the OMCs, and we have to supply the whole year's quantity month-wise. So this whole transparent process and the dynamic pricing process of the OMCs allows us a stable income stream. It gives us very good reputation as we are already empaneled with them. Thirdly, we are trusted partners of the OMCs, and uh, uh, we've been performing very nicely in terms of our supply, in terms of our allocation and supply ratio. Overall, their dynamic pricing mechanism also helps us in taking care of the market fluctuation in terms of the pricing that they give it to us. Overall, this tender model has given us a very sustained, a model where we can have a very sustained growth going forward. So yeah, our company strategies. This is one of the key things that our team discusses every day in and out. This is our core job to devise superb strategies to take our company forward. Our core discussion points every time and core goals are are based on increasing our production by investing in technology. We want to keep using indigenous feedstocks and increase our capacity through technological arrangements, as well as setting up facilities where we can add value to our byproducts also. We want to keep focusing on maintaining quality. Quality is our absolute mantra that we're focused on, and that is why we are renowned in terms of supplying biodiesel to OMCs. Let me tell you, there has not been even a single liter of biodiesel that has been rejected by OMCs in the last 5 years of our company. So, uh, going forward, maintaining quality, improving our refining process, and tapping the 5% blending target of the OMCs will be our mantra. We want to keep reinvesting profits again and again in the business because the sector is so huge. There are good profits to be made in times ahead. Overall, we want to increase our efficiency and have leaner operations and increase our capacities by acquiring units as well as establishing new ones. So this gives us a summary of milestones that our company has achieved. As I mentioned earlier, in 2016, we were incorporated. 2018, our plant was commissioned. In 2019, we became the first ever supplier to supply biodiesel to Indian Oil at their Mohanpura terminal in Jaipur. So we were really happy at that time as it was a big milestone in 2019. In 2020, the Rajasthan government came out with a policy in terms of retail of biodiesel. We were again approved and empaneled as an approved manufacturer in that Rajasthan biofuel policy. The policy currently is under development phase, and very soon you might be able to see us in the retail sector also once the policy is in place. In 2021, we successfully completed a technical upgradation at our Fulera plant, which gave us results in 2022, where we were approved as per the new BIS specification. Our product was technically approved. So from there on, we have never looked back. And going forward in 2024, we made a recent acquisition of our subsidiary Nirvan Raj Energy Private Limited in Meerut. We've acquired 75.21% stake there. And another point that I'd like to discuss is that in May this year, 2024, we were approved by Vera, which is a carbon credit approving body in the United States of America. Arguably, it's one of the most prestigious carbon credit rating organizations in the world. And we have been approved and allotted carbon credits also this year. So this is our key management. Myself, Sarthak, the managing director, Tanay, whole-time director. Mr. Sudeep Soni is the executive director. Madhuri Surana is the NED, and Palash and Shrey are independent directors. So coming on to our financials,
As you can see that from financial year 2022 to 2023, we have posted constant growth in our revenue, and you can see a massive growth in our revenue around more than 100% from financial year 23 to financial year 24. Similarly, you can see that our profits also have steadily gone up. And in 2022, it was 9.14 lakhs. And sorry, in in financial year 2022, it was 29 lakhs, and it was 2.27 crores in financial year 23. This is the profit before tax figure, and 6.08 crores in financial year 24. Going forward, we are looking for a stable revenue, as we mentioned that the OMCs are very bullish on the tenders. Going forward, we can see a stable rise in our revenue as well as profitability. So this is our balance sheet. As you can see that our asset side is constantly growing. As we are a growing company, we are acquiring new units, we are establishing new units. So our major agenda is to keep the asset side always heavy, and keep a check on the liabilities also. So this sector has given us a great opportunity to have good numbers in pipeline and to keep good numbers in shape. These are some of the key ratios in terms of the financial statements of our company. We discussed about the betas, PAT, and the total income earlier. We've had stable growth, as you can see in our revenue, and PAT margins are around 8 to 9% every year. Our betas have also been stable at 14 and 15%. So going forward, industry has given us a great chance to keep performing. So our RONW and ROCE have also been decent, as you can see. As on July 2024, this number is not annualized, it's only for 4 months. So you can see a 16.49% RONW and 11% ROCE as per July 2024. This is the figure for only 4 months. And our debt to equity ratio is almost in the ideal range, as you can see in 2023 and 2024. So yeah, this is a slide which is telling you about the biofuel industry growth story. As I mentioned earlier, the 5% blending target by 2030 set by the OMCs would require almost 450 crore liters of biodiesel. This poses a great opportunity in front of us. India has already demonstrated that how keen they are on to use biodiesel. There is a general acceptance and awareness regarding the product, and along with the right policies in the as the government has shown, and we have strong tailwinds favoring us. And in the next 5 years, we are expecting almost a 30% increase of biofuel demand. So this is a brief of our SWOT analysis. Strengths and opportunities we've discussed. In terms of weaknesses, this business is very high working capital intensive. And in terms of retail, every state has different policies. So whichever state we want to enter and retail, we have to work according to those states. That becomes a little tedious sometimes. But as of now, a lot of states don't have the retail policy also. In terms of threats, there are some government policies. Any change that can come, which I don't think should come anytime soon, or till 2030, we have super targets, and going forward also. Electrification can also pose a threat to our industry, but I would like to say, we still have power cuts today in central of the city where we are located. So electrifying cars is a long story in India. That's my take on it. So yeah, this was a small brief on the SWOT. This is the object of our issue. So our issue size is around 24.7 crores, where we would be using 4.2 crores as loan to our subsidiary Nirvan Raj Energy Private Limited, where we would want to expand its capacity and double it up from 20 KLPD to 40.
12.2 crores would be used in working capital requirements, and other would be the general corporate purposes. So now I'd like to hand over to Mr. Kaushik, who would explain you more about the issue details of our company. Hello everyone. Good afternoon. Myself Kaushik Khambadia from the GYR Capital Advisor Private Limited. So let's our issue is opening from the 25th November 2024 for the anchor, and other than anchors, the issue opening as on 26th November to the November 28th November 2024. Our issue is a book build issue. So our price bid is floor price is 123 and cap price is the 130. This issue comprise total up to 19 lakhs equity shares, and our lot size is 1 lakh equity shares. The minimum investment as per the floor price is the 1 lakh 23 3 lakhs 1 lakh 23,000, and cap minimum investment in a cap price is 1 lakh 30,000. Let's see the structure of the offer. So in our offer, uh, market maker portion is 1 lakh 41,000. Anchor portion is 5 lakh 15,000, and QIP portion is 3 lakh 45,000. And the non-institutional portion is 2 lakh 70,000, and a retail portion is 6 lakh 29,000. uh, and uh, uh, and our promoter pre-holding is 90%, and after completion of this issue, the promoter holding is 65.69%. That's it. Thank you. Kaushik ji, and thank you, Satvik ji, for giving excellent presentation. Now you can close this PPT. Thank you. Now open the floor for Q&A. I request all the participants to please raise your questions in the comment box. Yes, Shrutika has raised her hand. Please go ahead. Vinod Agarwal. Hello. Ye- Hello, can you hear me? Can you hear Yeah, me? yeah. Yes. So Yeah, sir, I can hear you. No, just what is your my yeah, main sorry for concern? interruption. Shrutika, you can go ahead, and Vinodji, you can start again. Start Yeah, later. so, Shrutika, please go ahead. yeah, so my main concern in the industry is, as you stated, the government regulations and the ever-changing policies. Because the roadway ahead to the biodiesel future is haywire. I mean, my first concern is also as per the order book. What is your concerning order book from the OMCs, that is the PSUs, lined up? And also, how do you plan to tackle up with the ever-changing policies of the government when it comes to states and different private utilities? Also, what is the inventory stock-up period generally in your company? Thank you, ma'am. Thanks for a great question. Um, uh, so, I would like to answer your question in parts. पहला क्वेश्चन जो आपका था कि एवर चेंजिंग पॉलिसीज गवर्नमेंट की हो सकती है या Yeah. हो सकती हैं होती हैं, उसको कैसे आप केटर करेंगे? देखिए मैम, देर इज अ क्लियर कट 5% ब्लेंडिंग टारगेट दैट हैज बीन सेट बाय द गवर्नमेंट. इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक ये 2030 तक ये टारगेट भी अचीव हो पाएगा, क्योंकि अभी 5% में से ओनली Exactly. 0.5% टारगेट ब्लेंडिंग का अचीव हुआ है. So I think our company will play a key role in ramping up this number in terms of the blending target. So changing of policies तो बहुत दूर की बात है मैम, because there is a specific guideline where our country has to reduce dependence on imported crude oil. This helps us in not letting our foreign exchange go out of the country also. So, and of course, last but not the least, climate change का जो एक जो पूरा agenda है, which the government of India is pushing, also is playing a key role in driving this policy. I'd like to
share an important update with you. World's Global Biofuel Alliance has been approved to be established in New Delhi. India will be chairing the World Global Biofuel Alliance, and its office and its secretariat is being made in New Delhi. So in couple of years, you will see India as an emerging power and emerging leader in this sector. So change of policy, I don't think is a question. It's a possibility, but I don't think it's a question. Next part that you asked was about our order book. So I'm also glad to share that on 20th November we were released an order of 170 crore, approximately 170 crore rupees from the OMC for biodiesel supply to them. So this is our order book for the whole year that we have in hand already. So in terms of our order book and your ever-changing policies question, I think I've catered your question. What was the other thing that you had asked, ma'am? So my other question is like, suppose you get an order from a particular company. So in how many months do you basically deliver it, and what is the period of the inventory stock, and what is the expected CAGR also? ओके सो देखिए, पूरे साल का ऑर्डर मिलता है हमें Hmm. स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू नेक्स्ट ईयर सितंबर. सो दिस इज द कैलेंडर ईयर फॉर द ओएमसीज. अक्टूबर 24 से सितंबर 25 तक का हमारे पास 170 करोड़ का ऑर्डर बुक हाथ में है. एवरी मंथ वी कैन सप्लाई द क्वांटिटीज, हाई लेस व्हाटएवर, बट दिस इज द वॉल्यूम वी कैन फुलफिल. जो हमारा इन्वेंट्री पीरियड है, generally if you don't supply material to OMCs, they levy a 3% penalty on your order book. So we maintain a 10-12% inventory as backup. So if there is any supply chain disruption or any form of emergency that arises, we need to have that much of stock so that we are not able to fall in that penalty category. As on date, in the last years, there has not been a single rupee penalty that has been levied on us. हमने जितना बिड किया है उतना पूरा वॉल्यूम सप्लाई किया है. सो वी आर कंपनी इज वेरी कीन एंड फोकस्ड ऑन द वॉल्यूम वी बिड एंड वी सप्लाई होल ऑफ दैट वॉल्यूम. So this is generally the cycle of biodiesel supply and the inventory period that we have to hold. So year on year 10 to 12% हम inventories रखते हैं, not more than that. Sir, I would just like to interrupt you over here. Since you said you generally have a 10 to 12% of inventory hold up, and also since you said that government, you don't see the government changing their policies likely up till 2030. But as far as I can see, sir, because there's an inclination towards the reduction of crude, I mean, sorry, from of coal in the power sector, we're also switching towards renewable, that is renewable battery energy systems, pumps and all. So I think the demand for biodiesel is going to be very crucial. And if during your inventory stock up, some policies have changed, then don't you think there'll be inventory loss in your? एक्सेलेंट क्वेश्चन मैम. देखिए, हम लोग को इस बिजनेस में 7 साल हो गए हैं. 7-8 years of experience we have already. We started our business from catering private clients also. I forgot to, or in fact, I did not give a lot of weightage to the private clients. I was focusing on the major revenue stream, which is from the OMCs. Before that, we've had private clients as a major part of our revenue, and the OMC policy came later on, where we started deriving revenues from them. So today also we are maintaining a pool of private clients as well as government clients also. We've catered big companies like Adani in their coal mines also, ACC Cement or other cement companies, JK Super. So all these heavy industrial equipments and sectors like big transporters also, we've successfully supplied biodiesel to them. And today also they are demanding biofuel from us. But we are getting a push from the government, which is so aggressive that every liter that we are producing, we have to give it to them. That's the push. That's the off-record push we have from them. That whatever you are producing, please give it to us. We are blending and giving it to our clients indirectly. So the day, I hope it doesn't happen, but मुझे नहीं लगता ऐसा होगा. But even if there is 0.0001% chance कि कोई पॉलिसी में चेंज आता है 10, 12, 15 years down the line, you can say, तो हमारे पास प्राइवेट सेट ऑफ क्लाइंट्स रहेगा मैम.
These big companies also have an obligation towards managing their carbon footprint also. These are big So, corporates and they have a responsibility towards the country and climate change also. There also we step in. तो ओवरऑल देखें तो बायोडीजल का एक सर्टन बायोडीजल इज अ पार्ट ऑफ द लिक्विड बायोफ्यूल सेगमेंट. सो बायोफ्यूल तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है मैम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आपने जो कोल ब्लेंडिंग की बात करी वो सॉलिड बायोफ्यूल में आता है, विच इज नॉट लिंक टू आवर सेक्टर. जो लिक्विड बायोफ्यूल है उसमें हम हैं, so that has ethanol and biodiesel. So biodiesel goes into diesel and ethanol goes into petrol. So I think going forward, even if there are new products or new things coming in, 8,000 करोड़ लीटर का मार्केट शेयर डीजल का, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है वर्ल्ड में जो इस शेयर को रिड्यूस कर सकता है. इसको स्टैग्नेंट जरूर रख सकता है, बट दैट टू आफ्टर 10-15 years. इंडियाज एनर्जी नीड्स आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग. They will constantly rise क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बूम इज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड इट विल कीप बूमिंग फॉर द नेक्स्ट 20 years. India is in its golden phase, and as the manufacturing sector rises, their energy needs are going to increase. Energy needs increase करेंगी तो ब्लेंडिंग नीड्स इंक्रीज करेंगे, और ब्लेंडिंग नीड्स इंक्रीज करेंगी तो लिक्विड बायोडीजल सेक्टर में हमारा रोल बढ़ेगा. सो your question was absolutely fine, but I think there is a long way to go ahead for us. yes, sir. Thank you so much, sir, और for answering my queries. सॉरी, एक आपका क्वेश्चन था मैम Yes, sir. इन्वेंट्रीज का. इन्वेंट्रीज एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर रखी जाती है मैम. तो पॉलिसीज डोंट कम ओवरनाइट. वी Yeah. विल गेट टाइम टू लिक्विडेट आवर इन्वेंट्रीज. ये लिक्विड गोल्ड की तरह है मैम. जैसे गोल्ड आप रात को जाकर के कहीं भी दें तो आपको कैश मिलता है, you get money right away. So it's the same. बेशक OMCs का पेमेंट लेट है, but we will get time to liquidate our inventories even in case of emergency also, which I don't think will arise. Moreover, जो private sector है, they are standing at our doorstep every day. You won't believe, I have had 10 calls in the last 2, 3, 4 days, more than 10 calls from big transporters and organizations that we want to associate, please supply to us. I unfortunately have to deny all of them. तो सेक्टर बहुत बड़ा है एंड आई डोंट थिंक 8-10 करोड़ की इन्वेंट्री इज एन इशू मैम. Okay. Thank you so much, sir. थैंक यू. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मैम. Yes, 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 sir. Thank you so much. थैंक यू. Thank you, Shrutika. I request all the participants to please restrict to 2 questions as everyone should get a chance. Vinodji, you can go ahead. Yeah, yeah. This is Vinod Agarwal speaking. I just wanted to know, you're going to put up a third plant there. You're mentioning दो plant आपको दोनों 80% capacity पर run कर रहे हैं, and now you're needing a third plant also. तो उसका capex कितना जाएगा, and how much is the liters of the total liters or that you're manufacturing biodiesel? This is what I'd like to know. राइट सर, थैंक यू फॉर योर क्वेरी. सर, हम लोग सबसे पहले तो कुछ डी बॉटलनेकिंग री इंजीनियरिंग करके वी आर मेकिंग चेंजेस, कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग आवर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, कॉन्स्टेंटली सिटिंग विद आवर टीम टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी. तो वो करते करते फ्रॉम 50 KLPD कंबाइनिंग 50 to 60 KLPD कंबाइनिंग आवर बोथ यूनिट्स, हम लोग 60-70 पे पहुंचेंगे. एंड आफ्टर द प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू कम, as mentioned earlier, 4.2 crores are going to Nirvan Raj in our subsidiary for again enhancement of production capacity. So very soon we'd be hitting the number of 80 to 90 kiloliters a day. और रही बात यूनिट 3 की सर, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर अराउंड 11 to 12 करोड़ का है सर. Okay. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, Agarwal ji. Shah ji, please go ahead. Vastal Shah. Yeah, hi. So, can you talk about the unit economics? Like, what price does the OMCs give you, and what margin do you get on per liter basis? So our prices are based on a dynamic pricing formula set by the OMCs with consultation with KPMG. So our prices are based on our feedstock, which OMCs have derived an algorithm on the basis of which they give us a price. Every month they come out with a price, जिस प्राइस के बिहाफ पे हम उन्हें बायोडीजल सप्लाई करते हैं.
यूनिट इकोनॉमिक्स के टर्म्स में सर, द प्राइस अभी करंटली फॉर आर 170 करोड़ अलॉटमेंट, the average price is around 110 rupees a liter. That's the average price that keeps on going plus minus month on month as per the dynamic pricing formula. So that enables us to hedge our risks, sir. This mechanism. Got it. So on 110, if we take the current price, what is the margin you are making? Sir, we are making a PAT of around 8 to 10% approximately. That's been the trend that we've been seeing in the past. Okay, got it. And what is your view on the carbon credits market? So like, how are we going to like do business in that area? देखिए सर, एनीवन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन आई अप्रिशिएट देम पहले तो, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट लुक अप इन दिस सेक्टर. हमारे दो बाय प्रोडक्ट नहीं सर, तीन बाय प्रोडक्ट्स हैं: ग्लिसरीन, फैटी एसिड्स एंड कार्बन क्रेडिट्स. सो द मोर बायोडीजल वी प्रोड्यूस, द मोर कार्बन क्रेडिट्स वील हैव इन आवर इन्वेंटरी. सो कार्बन क्रेडिट भी हमारा बाय प्रोडक्ट है. As of now, we've not explored opportunities of what price we can fetch from carbon credits, but going forward, ये एक बहुत बड़ा market है. In times to come, I cannot quantify the number that we can make from selling carbon credits, but yeah, it will play a big role in our company's journey also in times to come. Got it. We have already been allotted with carbon credits, sir. Yeah, I saw तो वो that. ईयर ऑन ईयर एलोकेट होते जाएंगे, अक्यूमुलेट होते जाएंगे और एग्रीगेट होते जाएंगे हमारी इन्वेंट्री में. It's for a period of 10 to 20 years that we'll be getting these carbon credits year on year. Okay. Yeah, I have a couple of more questions. I'll join back in the queue. Thank you. Singh ji, please go ahead. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कार्बन क्रेडिट जो आप बोल रहे हैं वेरा में रजिस्टर किया है, जी. वेरा तो वॉलेंटरली है ना? वॉलेंटरी में तो ट्रेडिंग मेरे ख्याल से लगता है कि उतना है नहीं. मतलब वो तो दो पार्टी के बीच का ही बस चाचा को जब मिलने जाऊँ जब दूंगा. हाँ, तो इसका सर, बढ़ाया जाएगा तो ऐड डेट में नहीं तेज से कहीं सर आई थिंक विनोद जी को म्यूट कर. हाँ, सॉरी सर, आपका आवाज बीच में चले गया था. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सर? मैं बोल रहा वॉलंटरी वेरा, हूँ. मैंने वहां तक सुना था कि वेरा है, हाँ, वेरा से वॉलेंट आपको क्रेडिट्स मिले जी. हाँ, तो उसका उसका मेरे को ऑथेंटिसिटी में थोड़ा सा इशू है कि क्योंकि वो वॉलेंटरली कार्बन मार्केट है, तो वहाँ तो मतलब उसका आप कैसे उसको मतलब टेक केयर कर रहे हैं? क्योंकि और भी तो अदर कार्बन क्रेडिट्स का मार्केट है ना, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड है या वो सब है, तो बिल्कुल उसमें नहीं बिल्कुल अप्रोच सर. किया? देखिए सर, तीन बड़े मार्केट्स हैं कार्बन के वर्ल्ड में. जितना हमने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग वेरा, गोल्ड स्टैंडर्ड और एक अभी यूनाइटेड मिडिल ईस्ट में भी एक मार्केट चालू हुआ है सर. सो आउट ऑफ दीज थ्री, वेरा इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस. आर्ग्यूबली यू कैन से इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस, बट गोल्ड स्टैंडर्ड एंड वेरा पैरेलल एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं. जनरली इसका जब आपको क्रेडिट्स अलॉट हो जाते हैं तो अब इट्स लाइक. कैसा किस कितना क्रेडिट अलॉट हुआ है? मतलब क्या रहता है, मतलब किस देखिए सर, उसको? अभी हमें प्रायर पीरियड करीब एक सवा साल 2020 से लेके अभी तक का जो एक डेढ़ साल का अलॉटमेंट हुआ है अभी, वो करीब 8 से 10 हजार क्रेडिट्स हमें अलॉट हुए हैं अप्रोक्सीमेटली मई 2024 में, दिस ईयर. और आगे जाकर के हमें प्रायर पीरियड और कमिंग ईयर के ईयर ऑन ईयर अलॉट होते नहीं जाएंगे. ठीक है, उसमें तो वो तो होता होगा ना होता पर नहीं नहीं, समझ रहा हूँ. पर लीटर का कुछ होगा ना कि पर हाँ, लीटर एक आपने एक टोटल इमिशन, आपका बिल्कुल. इमिशन कितना है? मतलब अगर मैं पर लीटर या पर केजी ऑफ डीजल पे आपका इमिशन कितना है, CO2 इमिशन प्रोसेस का? सर देखिए, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, वेरा हम्म, का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. उस उसमें फॉर्मूला इमिशन में बताना वो पड़ेगा. हमारा, सॉरी. उसमें इमिशन बताना पड़ेगा ना अपने को कि मेरे बिल्कुल. प्रोसेस में तो हाँ. उनका ऑडिट, असेसमेंट, साइट विजिट, टेस्टिंग, अप्रूवल, ये पांच फेजेस में हमारा पूरा काम हुआ. इट टुक 18 मंथ्स फॉर दिस होल प्रोसेस. उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, वेरा ने. उस फॉर्मूला बनाने के बाद हमारे जहां भी लीकेजेस है कार्बन के, फॉर एग्जांपल फीड स्टॉक हमारे प्लांट तक आता है तो वो हम्म, डीजल की गाड़ी में आता है, तो वो हम्म, डीजल की गाड़ी कितना एमिशन कर रही है, वो हमारे हम्म, नेट एमिशन सेविंग जो हो रही है बायोडीजल यूसेज से,
उन्होंने हाँ माइनस किया, ऐसे ठीक करके एक ठीक है नेट ठीक है फॉर्मूला अंडरस्टूड उन्होंने बनाया, एंड ठीक आफ्टर है दैट एज अंडरस्टूड पर आवर अंडरस्टूड प्रोडक्शन। अंडरस्टूड या आई जस्ट वांट टू नो दैट थिंग ओनली। और या दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जो फीड स्टॉक है दैट इज नॉन एडिबल ऑयल ना। जी ओके इसका जी। इसका 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 सप्लाई चेन कैसा है अपना, मतलब क्या कहाँ से कलेक्शन हो रहा है सप्लाई चेन, रेडिली मतलब अवेलेबल सर, क्योंकि स्पॉट मार्केट में दिस प्रोडक्ट इज रेडिली अवेलेबल। जो भी बड़ी रिफाइनरीज हैं जो खाने का तेल बना रही हैं सर, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, उसकी रिफाइनिंग के बाद वेस्ट निकलता है, वो हमारा फीड स्टॉक है। So this is a ओके vast industry and it's readily available. And going forward, used cooking oil का market भी बहुत hot रहेगा. So यूसीओ का है as the यूसी eat तो right यूसी policy of India goes forward, so नहीं all यूसीओ hotels, restaurants, big fryers are coming and following the FSSAI guideline. तो वो यूसीओ आगे यूसीओ का जाते है हुए आपका used रूट, cooking oil is also going to play a big role. आपका रूट है यूसीओ का, हमारा आपका जो रूट है उसमें यूसीओ है। बहुत है सर, यूसीओ तो एवरी निक एंड कॉर्नर, नहीं एवरी नहीं हर नहीं गली में, आपके हर आपके चौराहे। आपके रूट में मतलब प्रोसेस में आप तो एडिबल ऑयल से बना, नॉन एडिबल से बना रहे हैं ना, यूज कुकिंग ऑयल से भी बनाते हैं आप पर इधर। यूज कुकिंग ऑयल इज ऑल्सो अ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एडिबल। नॉन एडिबल यानी अखाद्य तेल जो हम खा नहीं सकते। ओके यूज कुकिंग ऑयल ऑल्सो इज अ तो आप कैटेगरी ऑफ नॉन ओके एडिबल ऑयल। ठीक है अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो या या आपका तो ये कॉम्पिटिटर तो ये क्या बोलते हैं 12 करके है, कोटयाक भी है, कोटयाक है, हाँ, और कोटियाक साउथ में इज वन ऑफ हाउ हाउ द हाउ यू पीयर ग्रुप्स है। इनफैक्ट इनफैक्ट साउथ में एक कंपनी है जो कि सिंगापुर बेचती थी पहले, यूसीओ, उन्होंने अपना प्लांट डालना शुरू किया है। मैं नाम भूल रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल 12 है समथिंग कुछ नाम है उनका। तो बिल्कुल हाउ हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ विद देम। सर, वी आर ऑल्सो रजिस्टर्ड विद एफएसएसएआई एंड कलेक्टिंग यूज कुकिंग ऑयल्स एज ऑफ नाउ। हम भी कलेक्टर और एग्रीगेटर फॉर्म में हैं सर। सो आप खुद कलेक्ट करते हैं। जी, वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद होटल्स, हम धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ा भी रहे हैं हमारी। सो उस इट इज अ विंग वी आर कीनली फोकस्ड ऑन ऑल्सो। तो ये भी आगे जा करके बहुत अच्छा सेक्टर होगा। एज द अवेयरनेस राइजेस ना सर, हेल्थ अवेयरनेस जैसे बढ़ेगी, ये चीज यूज कुकिंग ऑयल बहुत अच्छी रेडिली अवेलेबल होने लगेगा। हैफा से बना रहे हैं आप लोग, हैफा किससे से, सर? हैफा हैफा फैटी एसिड, फैटी डिश है, हाँ, फैटी हाइड्रोप्रोसेस्ड एसिड्स तो ईस्ट। हर तरीके सर, पाम फैटी एसिड, सनफ्लावर फैटी एसिड, सोया फैटी एसिड, नॉन एडिबल फैट, सब कुछ। आपका रूट है इसमें। बिल्कुल है सर, मल्टी फीड स्टॉक यूनिट है सर, वी कैन यूज हाँ एनीथिंग दैट इज मैं चीप, मेरे स्पॉट को वही मार्केट में हम खरीदते हैं। तो मेरे को वही पूछना था कि आप ये बोल रहे हैं मल्टी फीड स्टॉक है आपका, मल्टी फीड है, जी। तो ईल्ड कितना है। यील्ड डिपेंड सर, अगर डिस्टिल कर रहे हैं प्रोडक्ट को इट इज अराउंड 80%, अगर नॉन डिस्टिल्ड बेच रहे हैं तो इट इज अराउंड 95%। ओके ओके और 110 रुपए के भाव में ना। बिल्कुल। और सर क्या होता है डिस्टिलेशन के, अगर प्रोडक्ट का कलर थोड़ा डार्क रहता है ना, यानी कि अगर इंफीरियर क्वालिटी का फीड स्टॉक है एंड द आउटपुट इज कमिंग लिटिल डार्क इन कलर, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस को ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो आई एम फीलिंग रियली नाइस आपसे कम्युनिकेट करने में, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो आई एम एबल टू, आई एम वेरी हैप्पी दैट आप यू आर अवेयर अबाउट द अभी फीड आपने, स्टॉक्स लेकिन एंड। आपने उसका जवाब नहीं दिया, हाउ हाउ डिफरेंशिएट योरसेल्फ विद कोट्रैक जेट वाला सर एंड दिस वन। डिफरेंशिएट, मैं आई डोंट थिंक आई शुड डिफरेंशिएट माई सेल्फ। मेरे स्ट्रेंथ आवर स्ट्रेंथ क्या है टारगेट्स फिर आर आपकी। वेरी क्लियर कि हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारे साथी मानते हैं हम उनको। दे आर आवर पेयर्स एंड इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी साइज इतना बड़ा है, और प्राइस जब हमें ओएमसीज दे रही है तो वो और हम सेम प्राइस पे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं सर। सो हम कंपटीशन सिर्फ कंट्री के कार्बन एमिशन कम करने का कर रहे हैं सर, ना कि एक दूसरे का मार्केट शेयर लेने का। सो द मार्केट इज सो ह्यूज, द अपॉर्चुनिटी साइज इज सो ह्यूज दैट वी आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन सर। तो स्केलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी इतनी है कि अगले 10 साल तो मैं नहीं देखता सर कि एक दूसरे का कंपटीशन होगा, क्योंकि प्राइस हमें गवर्नमेंट दे रही है। नहीं अब जैसे जो इंडोनेशिया के जो पाम ऑयल वाले जो रूट है वो तो पूरा डंप कर रहे हैं, तो वो उसको कैसे लेके चलेंगे आप। सर हमारा तो लोकल फीड मैं स्टॉक है ना आपको सर। बताता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, उस पर कुछ पॉलिसी है, आपने कुछ रिसर्च किया पॉलिसी पे कि जो इन इंडोनेशिया और टर्म्स ऑफ, मलेशिया में जो इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल के रूट से जो बन रहा है बायोडीजल या एविएशन फ्यूल बन रहा है, वो भी क्या कहते हैं ये, वो आई थिंक वो भी काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे है, आपसे सस्ती है उनकी, तो आपको वो क्या कहते हैं ट्रबल नहीं करेगा आपका 110 रुपए के भाव।
इंडिया पहले तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने को बंद करना चाह रहा है, यानी कि जिससे डीजल पेट्रोल बनाते हैं। अब वो कहेगा कि आप दूसरी कंट्री का बायोडीजल इंपोर्ट करो, तो दैट डज नॉट, उनकी फ्रेमवर्क और उनकी अम्ब्रेला में आई डोंट थिंक इंपोर्ट ऑफ बायोडीजल फॉल्स। इनफैक्ट हमारे पास तो एक्सपोर्ट क्वेरीज है यूरोप और अमेरिकन कस्टमर्स की कि आप बायोडीजल हमें सप्लाई कीजिए, तो हम उन्हें ये जवाब देते हैं, भाई पहले हम हमारी कंट्री की नीड्स पूरी करें और फिर हम एक्सपोर्ट पे देखेंगे। तो देयर प्रोडक्ट माइट बी चीपर फ्रॉम अस, बट हम अपने लोकल इंडिजिनस फीड स्टॉक से नहीं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है, थैंक यू। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, दूसरों को भी चांस देना है। सॉरी सॉरी, थैंक यू, हाँ, माय आई एम डन। तुषार जी यू कैन गो अहेड। दर्शल, दर्शल जी प्लीज गो अहेड। आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम विद। Uh, Hello, good evening. Hope I'm audible. यस यस। Yeah, hi, hi. So, just wanted to first know, just want to clarify what you were saying. Our order book is around 170 crores. So, when is that executable by? सर 1st November दिस ईयर टिल 30th September नेक्स्ट ईयर। Oh, okay. Fair enough, sir. So, what is our target for this year's revenue? And, आगे जाके what kind of growth rate can we see? Because I think we have mentioned that by the capex we can get another 200 crores revenue. So, when will that, when will the capex kick in, and, what kind of revenue growth will we be seeing? Great question, sir. As much as I want to tell you the exact revenue figure, I cannot. Regulatory reasons ने मुझे बांधा हुआ है। सितंबर रिजल्ट्स पोस्ट होंगे सर, आप हाफ ईयरली रेवेन्यू देख सकते हैं उसके बाद। बट 31 जुलाई के रिजल्ट्स आर देयर, सो यू कैन टेक अ फेयर आइडिया ऑफ द रेवेन्यू वी हैव डन। उससे आप एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं। बट वी हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ 170 करोड़ इन हैंड फॉर द होल ईयर, so I don't think I have to say more than this. Okay, fair enough, sir. So just like, so the capex, so what timeline are we seeing for that? Like, both the capex is how much time will it take to, get in line, sir? सर आपका वॉइस बीच में क्रैक हो गया। केपेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो कैन यू प्लीज रिपीट? The timeline for the capex, timeline, what, सर like, when will it start आई and when थिंक it will? 6 से 8 महीने में हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। द यूनिट 3 जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स अ टेंटेटिव टारगेट दैट वी हैव टेकन ऑन। और जो जैसे इशू कंप्लीट होगा, विल बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ डबलिंग अप द कैपेसिटी एट निर्वाण राज एज मेंशन्ड इन आवर आरएचपी। Okay, that's great to know, sir. So just like one question, like right now, I think in 4 months we've done 26 crores and we have to supply 170 crores. So we'll be able to manage that, sir, because सर अपना जो run rate है उस बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल 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 सही सवाल है आपका सर। देखिए ये साइकिल है सर। 1 अप्रैल से जब हमारी कैपेसिटी निर्वाण राज पे डबल हो जाएगी, तो लास्ट 6 मंथ्स में वील हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द बैलेंस ऑर्डर। और ये फर्स्ट 6 मंथ्स में वील कंप्लीट द 35% ऑफ द ऑर्डर पोर्शन। सो दैट्स हाउ वी हैव डिवाइडेड आवर ऑर्डर बुक एज ऑफ नाउ। Okay, fair enough. Got that, sir. तो हमने वो And एक्सपेंशन को इन लाइन रखते हुए बिड किया है। नॉट दैट काम ऑलरेडी चल रहा है उस पे। होपफुली हम उससे पहले ही फिगर नॉक ऑफ करेंगे। okay. That's great to hear, sir. Yeah, that's it majorly from my side, sir. Thank you. थैंक यू दर्शल जी। हरीश प्लीज गो अहेड। हर्ष प्लीज गो अहेड। Alright. Hey, excuse me. आवाज नहीं कर। Hello. यस सर। Hello. Am I audible? यस सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। I have two questions for you. Do you have any group companies?
Nirvan Raj is our only subsidiary as of now, That sir. is your And subsidiary. My yeah, question is, do you have any related party with your group companies? no, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tusharji, please go ahead. Yeah, good afternoon, and thank you for the opportunity. So just wanted to know, you manufacture this biodiesel through palm oil route. There is also one corn oil route, which other people like in alcohol industry, I know like Global Spirit is kind of experimenting. Just wanted to know your take, the route of corn oil and how do you see that? एक्सेलेंट क्वेश्चन सर, आप इससे लगता है बहुत अपडेटेड हैं एंड यू आर राइट, यू आर फॉलोइंग दिस इंडस्ट्री वेरी क्लोजली एंड कीनली. देखिए, आई वुड लाइक टू शेयर एन इंसिडेंट विद यू. कल का ही आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम एन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर कि हमने कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन किया है प्लांट में, जहां हमारा एक कॉर्न ऑयल निकलेगा जो पहले हमारा एक बाय प्रोडक्ट में ऑलरेडी जा रहा था. तो दे आर इंस्टॉलिंग अ डीकैंटर वेयर दे विल बी गेटिंग द कॉर्न ऑयल. दे हैव ऑलरेडी सेंट सैंपल्स टू आवर फैक्ट्री फॉर R&D पर्पस. तो हमारे पास ही आता है R&D करने के लिए कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं. सो इफ दिस हैपेंस इट विल बी अ वेरी मेजर डेवलपमेंट. तो एथेनॉल बायोडीजल का एक बहुत बड़ा अमेलगमेशन आपको दिखेगा इन टाइम्स टू कम. So yeah, we are on the job. We're seeing how it can be taken forward. अभी तो इनिशियल फेज में है सर. इंडिया में टेक्नोलॉजी इवॉल्व जैसे जैसे होगी, आई थिंक दिस ऑयल कैन आल्सो बी, आई थिंक इट इज माय ओपिनियन कि ये भी यूज हो सकता है. Got it, sir. Sir, Kodiak का capacity, if I am not mistaken, 4.5 लाख किलोलीटर का है. So अभी गवर्नमेंट टेंडर था 8.5 लाख लीटर्स का, किलोलीटर्स का. So just wanted to know, ये जो 170 करोड़ था, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा ना ये साल के लिए, और यू आर एक्सपेक्टिंग सम एनी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स? यस सर. सो द OMC टेंडर कम्स आउट इन साइकिल सर. साइकिल 1 थी ये. जनरली हर साल में 3 साइकिल्स आती हैं. जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि इफ वी फिनिश आवर टारगेट 2-3 मंथ्स 2 मंथ्स प्रायर, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि सेकेंड या थर्ड साइकिल में हम और एलोकेशंस ले लें. Got it, sir. And that means post like in H2, और आपका जैसे इनका जो आपकी कंपनी का केपिक्स होता है, so I think post that you will have some capacity left, right? स्पेयर कैपेसिटी, बिल्कुल सर, बिल्कुल. इफ वी गो बाय द मैथमेटिक्स वी विल हैव. Got it, sir. And sir, जो वर्किंग कैपिटल साइड पे OMC से जो ऑफटेक है, उधर कुछ इशू है, और एल्स in terms of managing working capital, any issue you are facing, or do you foresee any issue? देखिए सर, OMC ऑफटेक में 1% भी इशू नहीं है. OMCs आर द बेस्ट बायर इन द कंट्री एंड आई कैन से दे आर द बेस्ट बायर इन द वर्ल्ड ऑल्सो. भारत रत्न कंपनीज हैं सर. इफ यू आर इन कॉन्ट्रैक्ट विद देम देन यू आर सॉर्टेड. दैट्स व्हाट आई फील. सेकेंडली, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है सर, no doubt it is delayed sometimes, and working with the government sector, you can't ask for a lean working capital cycle, but we are exploring options of bill discounting also now, that will help us in making our operations and working capital cycle leaner. तो आगे जाते हुए that will play a main role in helping us managing our finances better. रही बात फाइनेंसिस की, तो स्पॉट मार्केट में मटेरियल खरीदना पड़ता है. दैट कम्स इन एडवांस एंड वी हैव टू सेल क्रेडिट पे टू द OMCs. सो दिस इज समथिंग दैट द बायोडीजल इंडस्ट्री, जैसे मैंने उसमें बताया था कि इसका एक वीकनेस कह सकते हैं आप. बट किस बिजनेस में वीकनेस नहीं है सर? एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन वीकनेस. इट इज हाउ अबाउट हाउ यूर गोइंग अबाउट इट एंड हाउ यूर मैनेजिंग इट. ओके सर, गवर्नमेंट ने कुछ इनपुट ड्यूटी लगाया है क्रूड ऑयल, यानी अपना ऑयल्स पे, उनका रॉ मटेरियल और उनका फाइनल प्रोडक्ट के लिए. तो इफ यू कंसिडर दैट एनी इश्यूज ऑन और पैट मार्जिन, एनी टेक ऑन दैट? Excellent question, sir. Shows that you are absolutely updated. देखिए सर, डायनेमिक प्राइसिंग फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू विच जो इंपोर्ट का इम्पैक्ट आया ड्यूटी का, वो हमें पास ऑन ऑलरेडी हो चुका है. सो दैट इज व्हाई आवर रिस्क्स आर हेज्ड in this transparent tendering system.
गॉट इट सर। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप ये इंडस्ट्री में टॉप 3 प्लेयर बोलोगे तो वो कौन से रहेंगे सर? सर कोटियार, यूनिवर्सल एंड कालेश्वरी। गॉट इट सर, थैंक यू, दैट वाज रियली ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तुषार जी। सौरभ जी प्लीज गो अहेड। बहुत बहुत बधाई हो आपको सार्थक जी। जो ये आपको 175 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 170 करोड़ का, जो आपका एग्जीक्यूट होएगा अभी नेक्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आपको एक चीज पूछना था, आपने जुलाई तक के फिगर्स आपने मेंशन किए थे, सितंबर तक क्या हाफ ईयरली फिगर्स क्या है? पहली बात तो ये है। सर वो पोस्ट होंगे तो मैं बता पाऊंगा, रेगुलेटरी रीजंस की वजह से वो आरएचपी पे मेंशन नहीं है ना सर। सो ओके। अभी पोस्ट हो जाएंगे वेरी सून, तो आई विल पर्सनली शेयर द डिटेल्स विद यू, और आपको सेकंड ऑनलाइन भी मिल जाएगा फिर। सेकंड चीज, आपका कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस ओएमसी के ऊपर ही है, तो सेकेंडरी मार्केट भी कुछ डेवलप किया है क्या आपने? जैसा ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स के लिए आप डेवलप कर रहे हो, तो बायोडीजल के लिए भी कुछ सेकेंडरी मार्केट इंडस्ट्रियल सप्लाई का कुछ किया है क्या आपने? सर आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट हम लोग इंडस्ट्रियल सप्लाई में स्टेट में वन ऑफ द लीडर्स रहे हैं पहले। हाँ। गवर्नमेंट का प्रेशर और अग्रेशन इतना है कि सारा मटेरियल वॉट एवर यूर मैन्युफैक्चरिंग प्लीज गिव इट टू अस, बिकॉज ऑफ विच उस पे वो हमें कुछ बहुत अच्छी प्राइसिंग भी दे रहे हैं सर। सो ओके। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, वी आर मेकिंग बेटर मार्जिन सप्लाइंग टू द गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कस्टमर्स। आज भी हमारी किट्टी में इन आवर पूल ऑफ कस्टमर्स वी हैव अ फ्यू प्राइवेट क्लाइंट्स आल्सो सर, जिनसे ओके। पुराना रिलेशन है सर। वी हैव नॉट लेफ्ट देम, वी स्टिल कंटिन्यू स्टिल टू डू सप्लाइंग टू बिजनेस देम। विद देम। वन मोर क्वेश्चन सर, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट, लास्ट में एक बाई प्रोडक्ट जो निकलता है, आप पूरा ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसके बाद भी आपको ढेप जो निकलता है, जो बोलते हैं उसको केक जैसा बनाते हो, तो उसका भी कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन सकता है क्या? सर वो बेसिकली सर दैट इज हैपनिंग इन एथेनॉल इंडस्ट्री। हमारा जो वो डीडीजीएस करके प्रोडक्ट है जो एथेनॉल से निकलता है। बायोडीजल में सारा लिक्विड वेस्ट ही जनरेट होता है सर, जो हम या तो ग्लिसरीन के फॉर्म में या फैटी एसिड के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। अच्छा, सॉलिड इसमें वेस्ट कुछ ड्राई भी। पाउडर केक नहीं निकलता सर। तो आपका टोटली 100% रिकवरी है बोलने का? 100% रिकवरी है सर, कुछ भी दैट्स वेस्ट ग्रेट। नहीं जाता। ओके, दैट्स ग्रेट, नो स्क्रैप। नो स्क्रैप, नो स्क्रैप सर। और अब वो वेस्ट को भी हम वैल्यू ऐड करेंगे सर, विल बी रिफाइनिंग हाँ। ग्लिसरीन टू फार्मा ग्रेड। ओके, थैंक यू सो मच सार्थक जी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ जी। वत्सल जी प्लीज गो अहेड। Yeah, hi again. I wanted to know the yield for fatty acids and glycerin. So you said that 80% is for biodiesel and distilled. So what is the yield for, like, what is the remaining part of glycerin and fatty acid? So I'll share a basic mass balance with you, sir. 100 kg of bio feedstock लेंगे, उसमें 16 to 18 kgs of catalyst ऐड करेंगे और 2.5 kg न्यूट्रल एल्कलाई कैटलिस्ट ऐड करेंगे, तो 120 kgs के मास बैलेंस में आपको 95 to 98% बायोडीजल मिलता है, अगर नॉन डिस्टिल्ड है तो, and 12 to 13% glycerin and 7 to 8% fatty acid. So this is the bifurcation of kg to kg mass balance. Got it. And इसका yield क्या है? Glycerin and fatty acid का, biodiesel का 110 है price. So glycerin and fatty acid का क्या yield Glycerin, है? sir, there's a wide range and wide category of glycerin, sir, starting from 12 rupees going to 120 rupees, sir. मतलब ये रेंज है सर, आप किस कैटेगरी का ग्लिसरीन बना रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। एंड रिगार्डिंग फैटी एसिड्स, तो उसका एस्टैब्लिश मार्केट है सर, 70 रुपीज से लेके 90-100 रुपीज तक भी इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो जाती है। Got it. एंड वर्किंग कैपिटल में आपने अभी बोला कि आप कुछ बिल डिस्काउंटिंग देख रहे हो, सो अगर हम 170 करोड़ का ऑर्डर बुक ले, सो उसमें अराउंड 60-70 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लग जाएगा, सो आप शॉर्ट टर्म डेट लेना पड़ेगा आई गेस आपको। सर 60-70 करोड़ का वर्किंग कैपिटल मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, और आवर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू आर क्लियरली मेंशनिंग, उसमें जो 12.2 करोड़ रुपीस का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर अपब्रिजिंग द गैप इन आवर टारगेट एंड द शॉर्टफॉल इन आवर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक वो और करंट रिजर्व्स मिला के हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट वील बी लेफ्ट विद सम स्पेयर अमाउंट्स टू इंक्रीज आवर साइकिल आल्सो।
हमने M1 एक्सचेंज पे ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया सर, बिल डिस्काउंटिंग एजेंसी, एंड होपफुली इन दिस साइकिल विल बी गेटिंग डिस्काउंटेड पेमेंट्स आल्सो। तो बहुत लीन हो जाएगा सर ऑपरेशंस आई थिंक। ओके, गॉट इट। एंड ये जो ब्लेंडिंग का टारगेट है 5% का, सो वो आपके हिसाब से मैक्स कितना जा सकता है 5% से? So, for you, I'll do a comparison पहले worldwide. America and Europe are doing B15, B20 already, and Indonesia has implemented B40 from January 2025. इंडिया ने 5% का टारगेट सेट किया 2030 पे, बट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट दैट यू कैन ब्लेंड अप टू 20% विदाउट एनी चेंज इन एनी अदर स्पेसिफिकेशन और मॉडिफिकेशन। तो 20% का टारगेट तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ जा सकता है विदाउट एनी चेंज। सो करंटली वी आर एट 0.5%, एंड 5% का टारगेट है विच कैन गो अप टू 20 विद इन आवर कंट्री। बट वर्ल्ड ने ये बेंचमार्किंग सेट कर दी है कि B40 भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकता है। B35 हो चुका है इंडोनेशिया मलेशिया में सर। बाय B35 आई मीन 35% ऑफ बायोडीजल ब्लेंड। गॉट इट। सो मेरा वर्किंग कैपिटल पे एक और मतलब क्वेश्चन है कि अगर हम कोटियार को देखें, सो उसका 4.5 कैपेसिटी है, स्टिल वो लोग यूटिलाइज खाली 10% ही कर पाते हैं। उसका रीजन है कि वो लोग के पास वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज रहता है। सो उसके लिए आई आस्क कि आपको भी शॉर्ट टर्म डेट लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? तो उस पे लाइक आर यू श्योर कि आपका इंटरनल अप्रूवल से हो ही जाएगा ये बात? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग उतना ही वी बिड सीइंग टू थिंग्स, आवर वर्किंग कैपिटल कैपेसिटी एंड आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी। जहां हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 85-90% तक हिट कर सकती है एज ऑन डेट और आफ्टर फर्दर एक्सपेंशंस, वहां तक का हमने वर्किंग कैपिटल का हिसाब लगा के बिड प्लेस करी है। वी आर नॉट वन ऑफ दोज मैन्युफैक्चरर सर जो बिड कर दे 4 times या कैपेसिटी हो जाए 4 times बट यूटिलाइज ओनली 10-20% हो रही है। I mean, it's a gradual growing phase. As soon as you complete this first benchmark of 170 crores, surely we'll be having higher bids next year. Got it, got it. That was it. Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you, Vasanji. Thank you, Satyajit, for answering all the questions very well. Now we'll Thank you. conclude this meeting as we have covered majority of questions. Thank you, Satyajit, Tanayji, Kaushikji, Ayushji for giving insights about the company and IPO to the investors community. And thank you, investors, for participating. Thank you once again. Best wishes Thank you so to much. Thank you, Rajputana. ma'am. Thank Thank you, you. everyone. Thank you all. Thank you. Thank you, everyone.